हेलो माय सुपर बेबीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ हाउ टू लाइटन योर डार्क अंडर आर्म्स। यस, and it's quite effective. I'm trying it for more than a month, and yeah, you're gonna be loving it if you use the way I tell you to use, and if you use the products I tell you to use. Yes, अभी dark underarms is associated with many reasons. Seriously, बहुत सारे reasons associated है। जब मैं बहुत ही ओबीस थी ना, मेरा ये जो अंडरआर्म्स है ना वो ऐसी कलर की थी सीरियसली, और बहुत एविडेंट थी क्योंकि मेरी बाकी स्किन कलर वाज लाइट एंड माय अंडरआर्म्स वाज दिस कलर। सो इट वाज क्वाइट बट कोई देखने नहीं वाला था, तो इट वाज ओके देन। सो As I grew up, I realized कि वो रेक्टिफाई हो सकती है, बट कैसे रेक्टिफाई हो सकती है वो मुझे पता नहीं थी। तो फिर जब मेरा वजन कम हुआ, दैट इज द टाइम आई स्टार्ट रियलाइजिंग दैट इज चेंजिंग, द कलर्स लिटरली चेंजिंग। ये कलर से ब्राउन होने लगी एंड देन स्टार्ट लाइटनिंग एंड लाइटनिंग. So one of the reasons I felt like lightening my underarms is when I lost weight. Like it started changing, the color started changing. तो मेनी रीजंस एसोसिएटेड है। ऐसा नहीं है कि पतले लोग के अंडरआर्म्स डार्क नहीं होते, वो लोग के भी होते हैं। मैंने भी बहुत सारे ऐसे देखे हैं। ऐसा नहीं है कि ओनली फैट पीपल्स अंडरआर्म्स आर डार्क, नथिंग लाइक दैट। मेरे लिए व्हेन आई लॉस्ट वेट, इसका कलर चेंज होने लगा। सो रिसेंटली अगेन व्हेन आई गेन्ड वेट, कलर तो अगेन स्टार्टेड गेटिंग डार्क, नॉट दिस कलर बट स्टार्टेड गेटिंग डार्क. And then when I lost it again, the colors started changing. That is the time when I had to maintain it. You have to maintain, babies. Let me tell you one thing about underarms or anything related to skin and hair. It's a continuous process. Today you do it, tomorrow you don't do it. You're not going to get any great results. You have to do it every day. You have to be religious with it. Fear you will see Zabardast results forever. Now you can't say now my underarms are flawless, so tomorrow say I'll stop doing. ऐसा नहीं होता है. नॉट ओनली अंडरआर्म, स्किन रिलेटेड, हेयर रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, हर चीज रिलेटेड यू हैव टू बी रिलीजियस एंड कंटिन्यूअस. नथिंग स्टॉप्स. ऐसा जब मैं बंद की, इट बिकेम सुपर डार्क. अगेन बैक टू स्क्वायर वन. वंस आई स्टार्टेड रेक्टिफाइंग माय स्किन, टेकिंग केयर ऑफ इट, अगेन इट बिकेम गुड. तो ऐसे ही होता है. क्या अभी मैं शेयर करने वाली हूँ आपको क्या करनी है, जो मैंने किया है मोर देन अ मंथ आई गेस. And yeah, मैं कंटिन्यू करूँगी. तो yeah, I hope it helps you because yeah, it should help you. It helped me big time. So I think it should help you too. तो आगे जाने के पहले सब्सक्राइब कीजिए, बहुत बड़ी मेहरबानी हो जाएगी. और जो घंटा है ना उसको भी क्लिक कीजिए. अभी आपने सब्सक्राइब भी किया और घंटा भी क्लिक किया और उसके बाद भी आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है, तो आपको क्या करना है ना, हफ्ते में एक बार आके मेरे चैनल चेक करो, मिसेस प्रियंका को, और देखो कुछ आया है कि नहीं. ज़रूर कुछ तो आना चाहिए. तो या दैट वे एटलीस्ट यू वॉच माई वीडियोज. अभी व्यूज़ इतनी खतरनाक है, मैं क्या बोलूँ. समटाइम्स मैं जब व्यूज़ देखती हूँ ना, मुझे लगती है अरे हे भगवान, मैंने कौन सा पाप किया कि किसको मेरे को देखना भी नहीं है. लाइक मैं समटाइम्स इतनी अच्छी अच्छी रेमेडी शेयर करती हूँ बालों के लिए, हेयर के लिए, जो इनटेक भी करना है वो भी, और व्यूज़ तो मैंने ऐसा कुछ पाप नहीं किया है. तो आप लोग को देखना चाहिए. तो आप लोग को नोटिफिकेशंस नहीं मिलती हैं तो प्लीज़ आ जाइए हफ्ते में एक बार मेरे पास और देख लीजिए. एनीवेज यस, तो आपको क्या करनी है आपके अंडरआर्म्स के लिए. पहले तो आप ध्यान रख लीजिए, आपको पेशेंस की ज़रूरत है. आप फटाफट रिजल्ट्स नहीं पाओगे. थोड़ा रिजल्ट्स आप पाओगे, बट आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो कंसिस्टेंसी इज़ द की, पेशेंस इज़ द की. आपको ये सब ध्यान में रखना चाहिए, बिकॉज देन ओनली यू विल गेट पॉजिटिव रिजल्ट्स. लाइक व्हाट यू फील, मैं हर टाइम ये मानती हूँ, लाइक व्हाट यू फील ना वही होता है. लाइक आई फील अ फनी फील, आई फील, एंड इफ यू फील द फील, आई फील द फील, यू फील. Okay, if that made sense. But yeah, feelings make a lot of difference. या आपके feelings में, आपके subconscious mind में, या आपके inner mind में, if it made sense, आप you feel like your underarms should lighten, it should look flawless. वो होती है. So feel like that, babies. Feel it. It will work. Not only underarms, जो ये skin है ऊपर वाली underarms की ऊपर, ये भी थोड़ा अलग कलर की है. Why? Because it's rubbing on your body and there are many reasons. The cloth you're wearing must be not suiting you.
पहला जो ध्यान में रखना है आपको पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी एंड ऑल दैट. दूसरी जो चीज़ आपको रखनी है कि दिस शुड बी कंसिडर्ड वेरी प्रेशियस like your face. You look after your face, right? You look after your neck, right? So you need to look after your underarms also just as your face and neck. Give that importance and that love and you see the change happening. Seriously, मैंने ऐसे ही किया था. Give that love, that pamper, that importance to your underarms and you will see a difference. Now ये सब मैं बोल रही, जिसको चाहिए clean flawless underarms, जिसको वो सब नहीं चाहिए ये वीडियो मत देखिए सीरियसली, क्योंकि ये सब अंडरआर्म्स के बारे में ही है. यू मस्ट बी थिंकिंग अरे व्हाई शी इज टॉकिंग सो मच अबाउट अंडरआर्म्स, इट्स जस्ट अंडरआर्म्स, इट्स जस्ट armpits, so why give it so much importance? But yeah, I'm trying to take care of myself. Yeah, not only my thopda, even my underarms. So yeah, if you are the one like me, then watch this video. अभी कुछ दिन पहले मैंने एक सोप शेयर किया था आप लोग के साथ. डिड यू मेक इट? डिड यू ट्राई इट? नहीं ना, मत ट्राई कीजिए. बट अभी आपको ट्राई करना पड़ेगा बिकॉज इफ यू वांट लाइटर अंडरआर्म्स, यस, sometimes I would say whiter underarms also because sometimes when the color changes na, it looks whiter. So lighter जो भी brighter. So yeah, it comes in the same category as of now for the underarms because it literally looks bright for some people, literally looks light for some people, and literally it looks white for some people. तो या वो सोप आपको बनानी है. अभी वो वीडियो आपको देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, आपको जाके वो वीडियो देखनी है बिकॉज दैट सोप इज सुपर गुड, बहुत ही ज़बरदस्त है. यू नीड टू मेक इट. सो फर्स्ट वेट योर अंडरआर्म्स and rub that soap in your underarms super well. Nicely massage into it. Don't apply too much of it, just a little bit is more than enough, and then keep on massaging it. Stay about for 1 minute and wash your underarms. After that, you need to apply a scrub. Why I use a scrub on my underarms is because you need to exfoliate your underarms because there are ingrowths, there are blackheads, sometimes whiteheads. If you look at it and scrutinize your underarms, there are many things out there, just not hair and discoloration. There are many other things. So if you scrub your underarms daily, it literally removes all the impurities and all the dirt and the dead skin, and it literally makes a difference. Try it out. It literally makes a difference. So yeah, exfoliation and scrubbing is the key. It's the second step which is very important. Too important actually from my experience, which I've been doing from quite some time. So this scrub which I'm using, I've already made a video on that, and if you want to know more about this, again I put it in the description box. Go and check out the scrub. This scrub has really helped because it has amazing ingredients and I feel like a jhantak mantak difference with it, like super wali difference jo hai na, that I find with this scrub. So you can use whichever scrub you want, whichever suits you. This scrub right now is suiting me and I will purchase it, repurchase it again and again because something which I like, I'll repurchase it. So this scrub I really like and literally gets rid of the blackheads and whiteheads. Seriously, now I have few marks on my underarms because I have squeezed out the ingrowths, the blackheads, and it leaves a mark. And it lightens when I go on looking after it, so that's not a problem. Now, how do you get rid of blackheads and whiteheads is another thing. After your bath, just gently squeeze out the ingrowths, the blackheads, if it's there. That's all. Mark might remain but lighten gradually because the soap you're using now, the scrubbers you're using, so it will lighten gradually. So that you don't worry, but get rid of the blackheads and ingrowths. So the second step is take a little bit of the scrub, very little, and massage on wet skin. Wet skin मतलब underarms के उधर. Massage for 1 minute or 2 minutes. Then let it be on the skin for 1 to 2 minutes and then wash it off. You will see a difference in one application only. But don't get like super excited. You have to do it religiously no matter what, every day. So that 1 day ka jhatka you will get so happy. My underarms became lighter, whiter, brighter. नहीं ऐसा कुछ होता नहीं है. It's temporary. You have to do it again tomorrow, then day after tomorrow. ऐसा आगे बढ़ो forever. Seriously, एज अ स्क्रब आपको ये नहीं यूज करना है तो क्या, I will share another scrub very soon, a natural scrub which I love. Seriously, बहुत ही सही है, which will do the same. Yeah, this I just like it because it suits me and I really like it. Natural remedies तो मैं apply करती रहती हूँ, but yeah, when some product suits me, I'm also very happy. Yeah, तो काश आपको ये वीडियो पसंद आई. If you did, don't forget to hit a like and yeah,
share this video because you never know who it might help. And see you later in another video very soon. Bye bye. Mwah.